Now here uh, you have written the definition of decentralization. Now I am going to give you what is the basic idea behind decentralization and write it. First introduction, you will write the basic idea behind decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. Mark this line. Second, you will write people have better knowledge of problems in their localities. Next, you will write they have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Third, very important, next write it. Or at the local level, it is possible for the people to directly participate in the decision making. This helps to inculcate to develop a habit of democratic participation. Conclusion में लिखो, local government is the best government to realize the principle of democracy, namely the local self-government. Now, here you have written all. Next, all three very important questions I have given you. Now, the composition of Gram Sabha, Gram Panchayat, municipal corporation, and municipalities, and how they have been formed. Now, in one of the class, I had given you the whole map work of it. Is it in a tabular form? You had written that what is the way, the function of working of the Gram Panchayat and Gram Sabha. From there, you will write all the points. All right? Is it clear? अब उसको दोबारा नहीं करेंगे. ऐसे बुक में जो है उसको मार्क कर लो. जैसे रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज. मार्केट. What is Panchayati Raj? The rural local government is known as Panchayati Raj. Each village or group of village in some state has a great panchayat, gram panchayat. Group of village को मिला दो तो ग्राम पंचायत होता है. पंचायत means पांच. 5 village मिलाकर एक पंच बनता है ना. पंच बनता है ना, मुक्का. देख रहे हो, 5 उंगली को मिला के एक मुक्का बनता है. वही बोला पंचायत. 5 village according to the population joined together and it is known as पंचायत समिति और पंचायती राज सिस्टम. अब उसमें देखो बहुत सारा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, यहाँ समझो इस तरह से राज्यसभा लोकसभा करके फंक्शन करता है. उसी तरह पंचायती राज में पंचायत समिति है, पंचायत ग्राम सभा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होता है, बीडीओ से ग्राम सभा और पंचायती के बीच में. तो नहीं, पंचायती के बीच में स्टेट और पंचायत राज जहाँ से शुरू होता है वहां पे तुम्हारा बीडीओज होता है. ब्लॉक डेवलपमेंट को लिंक करता है वो विलेज को स्टेट से. जैसे पढ़े हो ना कि स्टेट अपना बहुत सारा पावर और रेवेन्यू किसको दे देता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बांट देता है. ये 1992 के अमेंडमेंट में लिखा हुआ. तो विलेज लेवल में वहाँ का बजट पास करना, वहाँ के लोकल एरियाज को गाइड करना, ये सब उसमें उसका वर्क होता है. लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बोलो, बड़े टाउन्स एंड सिटीज में इलेक्शन जब होता है तो उसको वार्ड में बांट देता है. वार्ड. अब तुम लोग पढ़े हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब इलेक्शन लोकसभा का आता है तो पूरे इंडिया को जितना सीट है लोकसभा में उतने कंस्टिट्यूएंसीज में बांट देता है. अगर 545 सीट है तो 543 सीट में इंडियन कंस्टिट्यूएंसी को बांटा गया, और 2 जो है 545 में 2 जो सीट्स बचा, they are nominated by the president. The Anglo-Indian seats they are known as. All right. तो म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब इलेक्शन होता है तो इसको कहोगे कि बिग टाउन्स एंड सिटीज में, जैसे बिग टाउन्स एंड सिटीज कोई भी तुम्हारे एरिया में है तो वहां पे म्यूनिसिपैलिटी रहे. छोटे टाउन्स एंड सिटीज में सॉरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा और स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज में म्यूनिसिपैलिटी रहे. राइट. मेयर, ग्राम सभा के हेड को क्या कहा गया, जब सरपंच.
पंचायत समिति के हेड को क्या कहा गया, चेयरपर्सन। तो इसी तरह से उसका रैंक बदलते जाता है और वर्क करता है। लास्ट पेज खोलो, पेज नंबर 26, और वहां पे क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। राइट डाउन द क्वेश्चन, what are the merits and demerits of local self government? What are the merits and demerits of the local self government? Mark the answer. The local self-government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are 36 lakh elected representatives in panchayats and municipalities all over the country. इसलिए इसको कहा गया कि this number is the bigger than the population of many countries. इतना किसी कंट्री का पॉपुलेशन हो जाता है। स्विट्जरलैंड में हो सकता है इतना पॉपुलेशन क्योंकि छोटा कंट्री है, न्यूजीलैंड में हो सकता है 36 क्या लिखता है 36 lakh. Besides that, this number is bigger than the population of many countries of the world. The status for local government has helped to deepen democracy in our country. ये first merit लिखो. Deepen democracy means every person living in the remote area of our country, remote village, they also get the chance to participate in the politics, either right to vote or either stand for election, make political parties, or you can say or to make a democracy successful, we have number of levels of government. Central government, state government, and third tier government is defined as the local self-government. अब इसमें देखो, it has also increased women representation in a voice of our democracy. ये second merit इसका डालो. अब इसमें demerits डालो, तो दो merits डालो तो दो demerits भी डालो. There are many difficulties. While elections are held regularly at the central and state level, Gram Sabhas are not held regularly. Gram Sabha, Panchayat Samiti, ये सब जगह इलेक्शन रेगुलर नहीं होता है. इसलिए 1992 के अमेंडमेंट में ये पास किया गया कि इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाए लोकल लेवल इलेक्शन के लिए, और after every regular interval, that is after every 5 years, there should be an election in the local level of government. Next mark करो. Most state governments have not transferred powers to the local government. कौन सा दो चीज ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है 1992 के अमेंडमेंट में, पावर और रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को. इसका मतलब वो ट्रांसफर नहीं किया है. तो इसमें कहा गया 1992 के अमेंडमेंट में भी पढ़े कि दे हैव टू ट्रांसफर द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, द टू पावर्स, रेवेन्यू एंड अदर पावर्स. None have been given adequate resources. So mark here. So conclusion में लिखो, we are still far away from realizing the ideal local government. अब पेज नंबर 27 में बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको एक्सरसाइज में करो. जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, और fill in the blanks करो. Since United States is coming together type of federation, all the constituent states have equal power and states are independent from the होल्डिंग federal. टुगेदर मैम. Yes. हम होल्डिंग टुगेदर होगा शायद मैम. अब पहला वाला में तो होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन है. Since the United States is a holding together type of federation, मार्कर लिख लो वहां पे, fill in the blanks जो है ना उसमें लिखो holding together type of federation, all the constituent units, देखो all the constituent units all the constituent units have equal powers
and the states are strong, and the federal government and the strong states are strong, the federal government. But in India, coming together federation, ऊपर वाला में होगा holding together और नीचे वाला इंडिया में लिखोगे coming together federation, holding together type of federation. Some states have more power than others. In India, the state government, central government have more powers. हो गया? पिंटू, यस मैम हो गया। अच्छा आप एक दो क्वेश्चंस लिखो तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। फेडरलिज्म का क्वेश्चन लिखो, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपी एंड राइट इट। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे दे। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेडरलिज्म से लिखो। पैराग्राफ्स बुक का चैप्टर का पहले रीडिंग लगाओगे तुम लोग, इसलिए कि कोई भी पैराग्राफ उठा के दे देगा, है ना। इसलिए चैप्टर का रीडिंग और दूसरा ये ऑफलाइन होगा ना? यस मैम प्री बोर्ड तो स्कूल में होगा ना मैम? कब से होगा मैम? लास्ट 10th जनवरी 10th या 11th जनवरी से होगा। हम तो तुमको पहले ही तुम लोग को बोले थे सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में होता है। यस मैम। ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसलिए याद करो जो क्वेश्चन सब दिए हैं। याद हो रहा है ना? बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि किताब खोल खोल के छापते हो, नहीं याद करोगे तो पिंटू यस मैम। सब याद है मैम, क्वेश्चंस याद को है। याद करना शुरू करो। याद है? यस मैम, कुछ याद है। नहीं याद है। याद है मैम। अच्छा चलो लिखो क्वेश्चन। डिफाइन व्हाट इज फेडरलिज्म। डिफाइन व्हाट इज फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म। लिख लिए। डिफाइन व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिफाइन व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। What is the need behind decentralization? What is the need behind decentralization? How is Gram Sabha, Gram Panchayat work? How they work? Important questions दे रहे हैं। Write the amendment of 1992. ये एकदम याद कर रहे हैं, किसी भी तरह से घुमा के देगा आंसर यही होगा। 5 पॉइंट है, एकदम हाथ पे याद रहना चाहिए कि 5 में क्या क्या पॉइंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। What are the merits and demerits of federalism? What are the merits and demerits of federalism? क्या? नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट क्वेश्चन डालो। What are the key features of federalism? Key features of federalism. फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। What is the difference between horizontal and vertical power sharing? Differentiate between vertical and horizontal power sharing. इसका आंसर लिखे हुए हो ना क्लास 10th? Yes, ma'am. बोलो। Yes, I had given you the notes ना, तो उसी को इसमें याद करके लिखोगे।
बॉक्स का भी क्वेश्चंस देख लेना, क्लास 10th बॉक्स का भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन दे दे। What do you mean by tire system? What do you mean by tire? T-I-E-R, tire. तो उसमें क्या लिखोगे? टायर मीन्स लेवल्स। इंडिया को कितने टायर्स में बांटा गया है? 1, 2 और मोर। क्या बोलोगे इसमें? More. More. हाँ? More. 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 Yes. So more levels of government, 2 or more levels of government, है ना? अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं। इतना क्वेश्चन इसमें याद करना। होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर तुमको पता ही है। उसमें से जब भी लिखोगे तो ये सब चीज पॉइंट्स लिख लेना, है ना? पॉलिटिकल, नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, जो तुमको पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज, एकदम देखो पूरा चैप्टर एकदम समरी में अगर लिखवा देंगे तो भी याद हो जाएगा। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? लिखो क्वेश्चन जल्दी से। डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी। डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी। एकदम क्वेश्चन देते जा रहे हैं और उसका अब पूरा आंसर लिखा है। इसको भी पढ़ लोगे ना, जो हम अभी लिखवा देंगे पॉलिटिकल पार्टी का, तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस लिख लोगे। जरूरी नहीं कि एकदम बड़ा बड़ा आंसर का करो, क्योंकि समय अब कम है और तुमको ऑफलाइन एग्जाम होगा। याद बहुत बच्चा को नहीं होगा, तो जो दे रहे हैं ना उसको याद करते जाना, छोटा छोटा पॉइंट्स दे रहे हैं। यू कैन लर्न एंड राइट। जैसे पहले होगा डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी। A political party is a group of people. A political party, नहीं कुछ कर पाए ना तो फर्स्ट 2 चैप्टर का समरी को ना फोटो खींच के भेज देंगे व्हाट्सएप पे, हो जाएगा ना तब। क्लास 10th जल्दी बोलो। Yes, ma'am. उसी को देख के अपना सब याद करते जाना। अभी पॉलिटिकल पार्टी दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। Define what is political party. आंसर लिखो उसका जल्दी से। आंसर लिखो। A political party is a group. बुक में अगर है तो बुक में मार्क करते जाओ। बुक में मार्क करो, दूसरे पेन से मार्क करना जो पता चलेगा। A political party is a group of people। जहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है ना, वहीं पे मीनिंग पे मार्क करो। A political party is a group of people who aim to attain, नहीं दिया हुआ है उस टाइप से। Aim to attain power in the government through election. Aim to attain power in the government by election. हो गया? लिखे? Yes, ma'am. फिर से बोले? फिर से बोले दोबारा? No, ma'am. नो मैम, लिख लिया। लिख लिए ना? यस मैम। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। A political party works with an objective. A political party works with an objective to promote collective goods। कलेक्टिव गुड, देखो तुम्हारे बुक में जहाँ मीनिंग है वहीं पे दिया हुआ है सर। कलेक्टिव गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, या अगर बुक वाला याद है पॉलिटिकल पार्टी का तो उसको भी इस तरह से मार्क करो, जहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है ना वहाँ पे मार्क करो। A political party is a group of people who come together to contest election
hold power in the government. इसको first point में mark करो. और second में mark करो, they agree on some policies and programs for the society with a view to promote collective good. जो हम second point लिखवाए थे ना, उसका change किए थे language. अगर book का याद है तुम्हारा तो उसी language में लिखो. थर्ड पॉइंट लिखो, इसके 3 कंपोनेंट्स को मार्क करो. पहले नेक्स्ट पेज में आओ और वहां पे मार्क करो. पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप. क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पार्टीशनशिप. 4 ऑप्शन दे देगा तो तुमको उसमें करेक्ट मार्क करना है. तो पार्टीशनशिप क्या है कि सब पार्टी एक साथ मिलकर आकर सोसाइटी में गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको पार्टीशनशिप कहा गया. इसलिए यहाँ पे लिखो parties are about a part of society and thus involve partisanship. है ना, इसको अंडरलाइन करो. A political party has 3 components. इसको भी ऑब्जेक्टिव में मार्क करोगे. The leaders, the active members and the followers. हो गया. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, what are the important functions of political party? What are the important features of political parties? What are the necessity of political party? इसमें सब में यही आंसर लिखोगे. समझ गए ना, एकदम याद करके रखना, बदलना मत आंसर को. सब में बदल बदल की लैंग्वेज बदल के आंसर यही रहेगा. तो फर्स्ट लिखोगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. सेकेंड डालोगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. थर्ड में डालोगे व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. सब में आंसर यही डालना. ओके. अब देखो मार्क करो, फर्स्ट फंक्शंस को मार्क करो. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट mainly among the candidates put up by the political parties. For example, डालो in countries like India, उसी पैराग्राफ में लास्ट में देखो, countries like India, the top party leaders choose candidate for contesting elections. लिख लिए या मार्क कर लिए बुक में क्लास 10th. दिव्यानी Yes, मार्क किए ना सब. अब नेक्स्ट मार्क करो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. तो अब जब इसको लिखोगे ना तो मेन टाइटल ऊपर लिखना, मेन टॉपिक. तो पहला वाला जो मार्क किया उसका मेन टॉपिक में लिखोगे कंटेस्टिंग इलेक्शन. सेकेंड मेन टॉपिक लिखोगे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. तो अब पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में मार्क करो इन अ डेमोक्रेसी. In democracy, elections are fought in a democracy. In a democracy लिखो वहां पे parties in an election, parties put forward different policies and है ना, different policies and programs, and the voters choose among them. है ना, पार्टीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का है. पार्टीज पुट फॉरवर्ड, देखो पहला लाइन में लिखा हुआ है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम. हो गया. नेक्स्ट मार्क करो. थर्ड पॉइंट, parties play a page number 74, open that. Parties play a decisive role in making laws for a country. बस इतना ही छोटा छोटा पॉइंट्स लिख देना, उसके बाद बोर्ड के लिए याद करना, लेकिन पहले प्री बोर्ड का तैयारी करो. नेक्स्ट पॉइंट डालो पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. जो मेन टॉपिक है उसी को हम मार्क कर रहे हैं. Parties form and run the government.
Parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government. Fifth point में आओ. Fifth point में आओ. Parties that could not get majority, देखो लिखा है, those parties that lose in the election play the role of opposition. The parties in power, play the role of opposition. यहाँ तक मार्क करो. By their work में लिखोगे, they criticizing the government for its failure or wrong policies. उसका वर्क क्या है? जहाँ पे लिखा हुआ है criticizing, वहाँ बगल में लिखो they criticize government for its failures or wrong policy. और ये हमारे कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया होता है, रोल ऑफ ऑपोजिशन. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब जानते हो ना, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स को प्रिंट मीडिया कहा गया. मोबाइल, टीवी, सिनेमा, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. लेकिन ये दोनों मीडिया से भी सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मीडिया है वो है ऑपोजिशन. ऑलराइट. सिक्स्थ पॉइंट में आओ. Parties shapes public opinion. Parties shape public opinion. They raise and highlight the issues. यहाँ तक मार्क करो. Seventh point पे आओ. Parties ensures, parties provide people access to government machineries and welfare schemes. Machinery and welfare schemes implemented by the government. यहाँ तक मार्क करो. इसको 7th पॉइंट में लिखोगे. अब नेक्स्ट हम जो तुमको बोले थे, what is the need behind necessity of the political party. चलो यहाँ नेक्स्ट मार्क करो. We need political parties because they perform all these functions. These function में वो सातों functions को लिखोगे, है ना. जहाँ आया what is the necessity or need behind political party, जो थर्ड क्वेश्चन दिए थे, फीचर्स में तो इसको लिखोगे ही, फंक्शन में भी लिखोगे. अब अगर नीड और नेसेसिटी आ रहा है तब इसको लिखोगे. पहले स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से. We need political parties because they perform all these following function. वो सातों फंक्शन लिखो. contest the election, है ना, policies and programs, making laws for the country, parties form the government, all right, role of opposition, parties shape public opinion, है ना. इसके अलावा they assess to government machineries and welfare scheme. ये सब functions हो गया उसका. अब उसी को necessity में लिखोगे. But we still need to ask, अब इसमें next देखो, also democracy, यहाँ पे मार्क करो. democracy cannot exist without political party. यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है. why modern democracy cannot exist without political parties को क्वेश्चन में चेंज कर दो, ब्रैकेट में करो और उसका वही नीचे में आंसर दिया हुआ है, मार्क कर लो. मार्क करो. फर्स्ट मार्क करोगे. The necessity of political parties by imagining a situation without party. Every candidate in the election will be independent. Second, no one will be able to make any promise to the people about any major policy changes. Third, the government may be formed, but its utility will remain uncertain. Fourth, elected representative will be accountable to their constituency. मतलब जहाँ से वो जीत कर आया उसी के लिए काम करेगा, पूरे कंट्री के लिए नहीं करेगा. For what they do in the locality. और last लिखो, no one will be responsible for how the country will run. They will responsible of their locality from where they have come. ये पूरा इतना कर लिए. अब next देखो, the rise of political party is directly linked to the emergence of representative democracy. ये statement दे देगा और बोलेगा explain करो इस statement को, underline कर दो और इसको ब्रैकेट में करो और क्वेश्चन मार्क देके एक्सप्लेन करो. या क्वेश्चन ऐसे दे देगा व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो यही आंसर लिखोगे.
अगर कुछ नहीं याद रहेगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, तो बोलना कि लिखना वहां पे कि नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज स्टैंड इन इलेक्शन, we give our rights, that is the right to vote. Those who are chosen by majority, they form the government for the people. जिसे बोलते हैं ना, for the people, by the people, of the people. तो सब कोई people से common factor है, हमारे ही बीच में से, हमारे ही लिए और मेरे ही द्वारा, मतलब हमारा वोट, हम ही लोग के बीच में से कोई आदमी खड़ा हुआ है लीडर बनने के लिए, और जो इसको हम लीडर बनाए वो हमारे ही ऊपर लॉ बना रहा है। तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये तीनों चीज को कह के बोलते हैं इट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये स्टेटमेंट दे देगा तो अब तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आंसर स्टार्ट करोगे क्वेश्चन से ही, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी से स्टार्ट करोगे। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy because the large society need representative democracy। क्योंकि सब कोई पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, कुछ ही लोग जाएगा, और जो जाएगा जिसको हम अपना ताल दिए रहते हैं। ताल मतलब वोट, देखते हो ना खेलने समय सब अपना ताल दे देगा कि मेरे बदले ये खेलेगा, तो वही चीज हम नहीं खेलेंगे, मेरे बदले वो खेलेगा जिसको लीडर बनने का चाहत है, इंटरेस्ट है। ऑल आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। सेकेंड पॉइंट डालो, as societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and present these to the government. And they needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. Last डालो, they needed a mechanism to support or restrain the government, make policies or oppose them. Last point डालो, political parties fulfill these needs that every representative government should have. So political parties are also very necessary and we should have a representative democracy. अब next topic पे आओ, how many parties should we have? अब इसमें देखो one word question mark करो, more than 750 parties are registered with the election commission। इतना सारा पार्टी को रजिस्टर कौन करता है? एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, 750 पार्टी इसको रजिस्टर कौन किया? इलेक्शन कमीशन, है ना। But all these parties are not serious contenders in election। सब इलेक्शन में नहीं खड़े होते, कुछ ही खड़े होते, a handful, थोड़ा सा पार्टी। अब नेक्स्ट देखो, how many types of parties we have in India? पहला लिखो one party और a single party, second लिखो dual party और bi party, dual party और two party, थर्ड लिखो a multi party system। लिख लिए यहाँ पे। अब इसको याद करोगे, वन पार्टी कहाँ पे है? चाइना में। टू पार्टी कहाँ है? यूएसए और यूके में। और मल्टी पार्टी कहाँ है? तो इंडिया में। यहाँ देखो पेज नंबर 77 में दिया हुआ है, अब इसको तुम मार्क कर लो। वन पार्टी में देखो बुक में मार्क करा हुआ है कि करवा दे क्लास 10th? मैम किया हुआ है। छोड़ दे? एक बार बता दो, जल्दी बोलो। छोड़ दे कि एक बार रिवाइज कर दे? यस मैम, छोड़ दीजिए। कोई नहीं बोलता है कि एक बार रिवाइज करा दीजिए। नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 77 के लास्ट पैराग्राफ को देखो, उसमें देखो लिखा हुआ है व्हाई इंडिया हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालो, व्हाई इंडिया हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये एक बार बोर्ड में भी आ चुका है। अब इसमें आंसर मार्क कर लो। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, इट इवॉल्व्स ओवर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तो है ही, कांग्रेस पहले बना था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके बाद जनता पार्टी बना, जनता पार्टी से ब्रेक होके भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता पार्टी, ये बहुत सारा पार्टी उससे बनता गया। कांग्रेस से भी स्प्लिट होके बहुत सारा पार्टी बना, तो हमारे पास मल्टी पार्टी है।
लेकिन सबका एजेंडा पॉलिसी प्रोग्राम्स लगभग एक है, फिर भी कहता है कि इंडिया में वन पार्टी टू पार्टी कभी भी नहीं चलेगा। जब भी चलेगा तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम ही होगा। इसे मार्क करो, पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, its social and regional division, its history of politics, and its system of election. Mark karo. These cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is the condition by its special circumstances. In India, example though, for example, India evolved a multi-party system because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even three parties. So we have how many parties? Multi-party system. All right. Now next topic, national and political parties. Next topic देखो, political parties can be, ऊपर में लिखो जहाँ पे political parties लिखा हुआ है, a party system can be national or regional. national party लिखो, आप ये यहाँ पे ये चीज लिखना कि national and regional parties are recognized by the election commissioner. उसके बगल में जो अभी लिखे कि we have national and regional party, उसके बगल में लिखो they are recognized by election commissioner. They are recognized by election commissioner. They are now next यहाँ से mark करो. They are recognized by the election commissioner of India. What is national party? Define करो. The election commission has laid down page 79 के second paragraph में लिखो. The election commission has laid down detailed criteria for the proportion of vote and seats that a party must get in order to be a recognized party. All right. A party that secures, national party में लिखो, a party that secures at least 6% of total vote in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. 2 seats karo या लिखो less than 4 seats, they are no recognized as a